Okay, we will start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamam bil khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We will. Walaikum assalam, Nahid aunty. We are at lesson number 2. We are on chapter number 2. Let me share my screen. So we have with us Adnan, Sadia, Nahid aunty. We have Fuzail, Afifa, and Zahan till now. And we have Rahmat as well. Only 7 people today. Assalamu alaikum, Rahmat. Welcome to the class. We will get started. Awesome. So the first exercise is what Adnan and Zahan are going to love. So it's match the following. Okay. So sil bainal kalimati wa surati munasiba. So match between the words and the picture. Okay. So we are going to match the picture with the words. So Adnan, Zahan, Sadia, everyone take a shot. So the first picture is of someone reading a book. Okay. So first picture, someone reading the book. Which word will this match to? So we have pictures. Assalamu alaikum, Rahmat. Everyone who's not engaging in the discussions or practice, please go on mute. Nimra is attending the class with me. Okay, nice. Assalamu alaikum, Nimra. Walaikum assalam. So Sidra is not attending the class? Yeah, she is also here. Okay. Walaikum assalam. Welcome to the class. Ahlan wa sahlan. Jazakallah. Jazakallah khair. Okay. So let me stop annotation. I think everyone's getting excited. So let me stop annotation for a moment and we'll do the exercise together. So let me call out what the exercise is. Saqib Chacha, Yes, Zahan. congratulations to you. Congratulations to you as well, Zahan. So Zahan, elder brother today. So congratulations, and I've become uncle. Very good news. Awesome. So let me explain the exercise. Coming back to the class, we have pictures and we have words at the bottom. Pictures on top and words at the bottom. So the pictures are of someone reading a book, a person making wudu, the Quran, spectacles, a masjid, a room, and a coat. ठीक है? तो ऊपर पिक्चर है, तो पिक्चर में है एक आदमी जो पढ़ रहे हैं कोई किताब, एक आदमी नेक्स्ट वुदू कर रहे हैं. Let me use the pointer. थर्ड में एक कुरान है, फोर्थ में ग्लासेस है, चश्मा है, पांचवें में मस्जिद है, सिक्स्थ पिक्चर जो लेफ्ट से सेकंड लास्ट है जहाँ पे मेरा कर्सर है, वहाँ पे एक रूम है, लास्ट में है एक कोट. ठीक है, कोट जो हम पहनते हैं जैसे रेन कोट, सर्दी वाला कोट, तो लास्ट में एक कोट है और नीचे है वर्ड्स. ठीक है, और वर्ड्स है अल कुरान यतवद्दउ यक़रउ मस्जिद नदारा मिअतफ और गुरफा. तो अभी मैं सभी को चांस दूंगा इन पिक्चर्स को वर्ड से मैच करने के लिए. ठीक है, तो जब आप मैच कर दोगे तब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पिक्चर कौन सा वर्ड है. तो अभी मैं बात करूंगा आपको और सब रेडी हो जाइए एनोटेट करने के लिए. आपके पास एनोटेशन का अभी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, तो आई स्टार्टेड एनोटेशन. So guys, try matching, and Sadia, Adnan, Zahan, I think you are the best at this. So Zahan has matched the third picture. Good. Others, try matching the pictures. Okay, so Adnan has started matching masjid. Rahmat has started matching the coat. Very nice. Fuzail, Afifa, आप कर पा रहे हो match? Annotation कोशिश करना use करने के लिए. Very nice, Rahmat. That is spectacles, Nadara. Rahmat, Nimra, Sidra, very nice again. So that is Ghurfa for room, Nadara for glasses, Masjid is mosque, Quran is the third picture, very nice.
What about the first two? The first two are the new verbs which we learned. So what is for reading and what is for making wudu? What are these two verbs? Those are the ones no one has marked. So we have picture on the right. Yatawadda'u is making wudu. No, that is wrong. Wrong, Sadia. Very nice, Sadia. So Yatawadda'u is making wudu. And we have Adnan and Zahan doing mischief. Okay, what is Yakra'u? Yakra'u, the third word on the bottom from the right. What is Yakra'u? Okay, very nice. So it looks like people find it hard to remember the new verbs which we learned in the class. Okay, so no problem. We will revise it together. Al-Quran, that is correct. Let me clear the annotations and then explain. Okay, so now the picture is clear. I will mark it now, inshallah. So the first two pictures will come to it. This is the Quran Kareem. This is Al-Quran. So the तीसरा picture है left से वो है Al-Quran, the Quran. Fourth है glasses. Glasses है नदारा. ये भी बहुत सारे लोगों ने मार्क किया. Easy answer. हादिही हियन नदारा. तो जब डायलॉग में तीसरे डायलॉग में पापा जब पूछते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ है? When the father asks in the third dialogue, where are my glasses? He says, Aina nadara, where are the glasses? And the son, I think, says, Hadihi here nadara. Hadihi here because nadara is feminine. We have the masjid, which will match here. We have room. Who will tell me what do we say for room? Sadia, Adnan, what do we say for room? Adnan or Sadia? One. Adnan did not revise the new words. So Adnan has to search. Mayataf is the coat, I guess. Yes, Mayataf is the coat. And what do we say for room? This is a room. So we say Gurfa. Gurfa. Gurfa, very good. So Gurfa means room. Is Gurfa masculine or feminine? Is it male or female? Male. No. This Female. an ending It's ta Gurfa. Ha. Yes, so there's the ending ha. There's a ta marbuta at the end, the closed ta at the end. So Gurfa or Gurfatun, which would make it feminine. Nadara, is it masculine or feminine? Again, we see the ta marbuta at the end, which would make it feminine. Now, Rahmat, Nimra, Sidra, question to the three of you. What is the word for reading? So he is reading the book. He is reading the kitab. So how do we say reading? He is reading. Try guessing. There are two words. So it's either yakra or yatawadda. So it's either yakra'u or yatawadda'u. What do we say for reading? So Rahmat, Nimra, Sidra, question to you guys. Yakra'u. So yakra'ul Quran. He is reading the Quran. Okay, so easy to remember. So we have yakra, which means reading. There's only one left. So there's just making wudu. He's making wudu. What would we say for making wudu? Yatawadda'u. Very good. So wudu is the wudu that we make. Yatawadda'u is making wudu. Okay, so we have yakra, yatawadda'u, al-Quran, an-nadara, masjid, ghurfa, and mi'taf. Okay, quick revision of the other words. We have seen masjid, we have seen musalla. What's the difference? Who can explain? What's the difference between masjid and musalla? Me, can I? Yes, go ahead, Zahan. Yes, Musalla is a small place at your home where you read namaz. Very good. So musalla is any prayer hall. Correct. Any prayer hall. But masjid is a dedicated namaz. Very good. Very nice, Zahan. Correct answer. Okay. So we have masjid, musalla or prayer hall. तो मस्जिद है मस्जिद जहाँ पे
सब नमाज पढ़ते हैं। मुसल्ला है कोई भी जगह जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। तो कोई भी अगर जगह अलग किया है नमाज पढ़ने के लिए तो उसको बोलते हैं मुसल्ला। तो उसल्ली फिल मुसल्ला मतलब मैं नमाज पढ़ता हूँ मुसल्ला में। उसल्ली फिल मुसल्ला भी जमा, तो मैं मुसल्ला में नमाज पढ़ता हूँ जमा के साथ, ठीक है। अल कुरान इज अल कुरान करीम। हया बिना, हु रिमेंबर्स, किसको याद है कि हया बिना का मतलब क्या है? व्हाट इज हया बिना? Let's go. लेट्स गो, वेरी गुड। तो हया बिना इलल मस्जिद मतलब चलो मस्जिद चलते हैं। लेट्स गो टू द मस्जिद। Last हया week. बिना इला Roti सूक, लेट्स गो टू द सूक, सूक इज मार्केट, सो लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स गो शॉपिंग। Okay, so that is hayya bina. Nadara, we have seen his glasses. Nadara is spectacles. Mi'taf is coat. तो nadara मतलब चश्मा, मि'तफ मतलब कोट, गुरफा मतलब रूम, जो लिविंग रूम है, ठीक है, जहाँ पे लोग बैठते हैं उसको बोलते हैं गुरफतल जुलूसी। गुरफा रूम जहाँ पे लोग बैठते हैं, जुलूस मतलब बैठना, गुरफतल जुलूस। So when we say गुरफतल जुलूस, it means a room where people sit or the living room. Hammam means bathroom. Restroom. Yatawadda'u means making wudu. Hammam मतलब bathroom. Yatawadda'u मतलब wudu करना. यक़रा मतलब पढ़ना. यक़रा मतलब to read. यक़राउल कुरान मतलब वो पढ़ रहे हैं कुरान. यक़राउल कुरान मतलब वो कुरान पढ़ रहे हैं. He is reciting the Quran. युसल्ली मतलब सलाह पढ़ना. युसल्ली मीन्स ही इज प्रेइंग सलाह. युसल्ली सलातुल दुहर. युसल्ली सलातुल फज्र. युसल्ली फिल मस्जिद. तो युसल्ली मतलब सलाह पढ़ना. मतलब मदर. वालिदा, वालिदतुन का ऑल्सो मतलब है मदर. तो उम्मी बोलते हैं. उम्मी मतलब माई मदर. उम्मी मतलब मेरी माँ, ठीक है. तो मतलब माँ, उम्मी मतलब मेरी माँ. अब मतलब पापा, सेम एज वालिद. तो वालिद और अब सेम है, ठीक है. तो वालिद वालिदतुन, वेरी गुड हुसैन. वालिद वालिदतुन, अब सेम मीनिंग, ठीक है. तो अब मतलब फादर, पापा. अभी मतलब मेरे पापा. अदान मतलब अदान, जो अदान हम देते हैं हर एक सलाह के पहले. तो अदानुल फजरी, अलानुल दुहरी, अदानुल फजरी, अदानुल दुहरी, अदानुल असरी, अदानुल मगरिबी, अदानुल इशाई. अल फज्र मतलब फजर टाइम. तो यहाँ पे इस पिक्चर में कौन गेस कर सकता है कि क्या हो रहा है? तो पिक्चर है अल्लाहु अकबर है और नीचे लिखा है अल फज्र. हु कैन गेस व्हाट्स इन दिस पिक्चर? So it's Adhanul Fajr. Adhanul Fajr. Yes, Seymour. It's the time of Fajr. It's the time of Fajr. Okay, Seymour. अज़ान हो रही है. फजर की अज़ान हो रही है. वेरी नाइस. तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये अज़ान फजर की अज़ान है जो यहाँ पे है. तो हादा अदानुल फज्र, तो फजर की अज़ान है. तो यहाँ पे व्हाट वी सी हियर इज इट इज नाइट. तो रात का टाइम है और लाइट धीरे धीरे करके आ रहा है. तो फजर टाइम के बाद धीरे धीरे करके लाइट आता है और जब एक्चुअल सनराइज होता है तब सन निकल जाता है, ठीक है. तो पहले लाइट आता है फजर के टाइम से और फिर जो सन है वो निकल के आता है एट द एंड ऑफ फजर टाइम, एट द सनराइज. Slowly. औलाद. हु रिमेंबर्स व्हाट इज औलाद? Children. Children, very good. And what is singular? तो औलाद is जम्मा, is plural. Many of kids or many of child is औलाद. What do you say for one child? Ab. Sir, we joined, sir. No. Okay. Sir, welcome. Ilaf and Hanya joined. Hello, Elaf. Hello, Hania. You're a little late, but you haven't missed any lessons. Okay, so we are doing just exercises of the old lesson. Nice. So, aulad is children. Okay. Children is aulad. What do you say for one child? One child, what is the word for one child? One child is
walad. Okay, so walad is one child. Aulad is the plural of walad. तो walad मतलब एक बच्चा जो जनरली एक लड़का होगा. औलाद मतलब बच्चे जो जनरली बहुत सारे लड़के होते हैं लेकिन लड़कियां भी हो सकती है इन द कैटेगरी ऑफ औलाद. ठीक है. इब मतलब सन मतलब बेटा को बोलते हैं इब. ठीक है. तो इबन इज सन, walad is child, and aulad is children. Nice. So a lot of people have done derivation. Very nice. We will now move to exercises. Okay, and we will annotate again. How we will do it is I will say a word. तो मैं अभी एक word बोलूँगा. ठीक है. और आंसर either right होगा अल यमीन या लेफ्ट होगा अल यसार. ठीक है. और आपको टिक करना है कि आंसर क्या होगा. तो the answer will either be al yamin or al Stop telling that. yasar. Adnan, go on mute. Let me just move this box. So we have al yasar, which is the right, and al yamin. Al yasar is left, al yamin is right. Okay. Now I'll say a word, and you guys will have to annotate and choose either this box or this box. Okay. So you have to put a tick. तो मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपको सुनना है और आपको आंसर करना है कि जो राइट वाला बॉक्स है वो सही है, अल यमीन सही है या अल यसार सही है. ठीक है. So we will start. The first word is वालिद. वालिदुन. आंसर क्या होगा? ठीक है. जहां ने आंसर किया है राइट, रहमत राइट, अदनान टू द राइट, अल यमीन. बाकी लोग आंसर क्या है? आदमी या औरत? अल यमीन या अल यसार? अल यमीन. अल यमीन. ठीक है. तो वालिद है आदमी, तो वालिद है पापा, तो आंसर होगा राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मस्जिद. मस्जिद का आंसर क्या होगा? यमीन यसार? ठीक है. तो लोग आंसर कर रहे हैं टू द राइट, यमीन. यमीन. फुजिल, अब देखो आप स्क्रीन पे एनोटेट कर पाते हो क्या? वो एक ऑप्शन रहेगा जब आप स्क्रीन पे लिख भी पाओगे. There's a pencil sign. एक पेंसिल का साइन होगा फुजिल, अगर वो आप क्लिक करोगे तो आप भी लिख पाओगे बाकी लोगों की तरह. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इब्नुन. इब्नुन. Zahan has answered to the left, Rahmat left, Al Yasar, Adnan Al Yasar. Very good. तो इब्नुन मतलब बॉय, इब्नुन मतलब सन इन फैक्ट. तो इब्नुन मतलब सन. इब्नतुन या बिनतुन विल बी द गर्ल. ठीक है. तो इब्नुन या वलदुन विल बी द वन ऑन द लेफ्ट, व्हिच इज करेक्ट. ठीक है. नाउ डिफिकल्ट वन. मेअतफ. मेअतफ कौन सा है? अल यमीन अल यसार? Rahmat has answered, Adnan has answered, nice. Adnan is answering again, Zahan, very nice. Me'atof, Al Yamin, Al Yasar? It's Al Yamin, very nice. So Me'atof मतलब कोट. लेफ्ट में जो है वो है नदारा. उजैल, अफीफा, आंसर आ गया आपको? तो आंसर क्या है? अल यमीन या अल यसार? मेअतफ? अल यमीन. Al Yamin. Okay, Adnan is answering the question at the bottom. So Adnan, you tell me, what is the question? We've answered, Adnan has answered this. So Adnan, what's the question? What do we say for this? Adnan, Zahan, both of you answer. What's the question? If this is the answer, what should be the question? Adnan? Salah. Zahan? Yes? What do we say for praying Salah? Salah.
No, it's not as-salah. As-salah is the prayer. What do we say for praying the salah? What do we say for the verb? What do we say for the action of praying salah? The action of praying salah is yusalli. Yusalli. So the question, if it is yatawadda'u, yatawadda'u is the question. What's the answer? Yatawadda'u. Is it al-yamin, al-yasar? You need to choose between these two answers. So is it this one on the left, or is it this one on the right? Yatawadda'u. Sadia has marked. Rahmat has marked. Adnan has marked. Very nice. So yatawadda'u is making wudu, which is on the left. Yusalli is praying salah. Yusalli would be the question for the answer on the right. So yusalli yatawadda'u. Now last one. Jaddatun. Jadda or jaddatun. Is it al-yamin, al-yasar? Okay, Jaddatun is the one on the left because Jaddatun is feminine. So Jaddatun is Dadi. Jaddun is Dada. ठीक है, तो Jaddatun है question, तो आंसर लड़की होगा जो लेफ्ट में है. तो आंसर है अल यसार, अल यमीन है जद्दुन. Very nice, well done guys. Now moving on, we will do some practice. One more question, similar. अभी हमारे पास बहुत सारे pictures हैं. We have a lot of pictures. I'm going to say a few words. Okay, मैं सारे नहीं cover करूँगा. मैं थोड़े cover करूँगा और आपको choose करना है कि कौन सा सही है. ठीक है? तो आपको सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ. You've got to listen to me. And among these 20 pictures, तो 20 picture है. In fact नहीं. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 20 pictures हैं. 20 में आपको पिक करना है कि कौन सा सही है. ठीक है, तो फर्स्ट वन, और फिर से आई विल अलव एनोटेशन. फर्स्ट वन क्वेश्चन है शजरा. हादिही शजरतुन. कौन सा पिक्चर सही है? इजी क्वेश्चन. फर्स्ट या सेकंड डायलॉग. शजरतुन. We have a few answers coming. People are changing their answer away. Shajara. Table to erase. Okay, guys, you need to revise the words. If I go to this, Al hadihi shajaratun. Is this a shajara? Naam, hadihi usratu rasuli. Meaning क्या है? Zahan, what's the meaning of shajara? Family tree. Family tree. Rahmat, Sidra and Nimra. What's the meaning of shajara? शजरतुन मीन्स ट्री. शजरतुन को बोल रहे हैं झाड़. अभी क्वेश्चन टू हानिया एंड इलाफ. व्हाट इज उसरा? हादिही उसरतुर रसूली. ओके, सो वी हैव उसरा एंड वी हैव रसूली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उसरा? हानिया एंड इलाफ, क्वेश्चन टू यू गाइस. कैन यू हियर मी? हानिया, इलाफ. I don't seem to be able to hear you. Rahmat, Nimra, Sitra, question to you. What is Usra? Hadihi Usratu Rasuli. What would Usra translate to? Are you on mute? I cannot hear you, Rahmat, or Anya, or Ilaf.
Guys, usra means family. So usratul rasuli means family of the Rasul, of the Prophet. Okay, so guys, you need to revise the words and the vocabulary because we are doing a lot of practice of the vocabulary. So if you do not revise, you miss out on the vocabulary, which is very important. Now let me clear all drawings. So shajara, what would the answer be? Zahan has marked. Sadia, Adnan has marked. Rahmat, okay. I could not hear you, Rahmat, but you seem to be able to hear me and mark the answers. Fania, Ilaf, I do not see you marking answers. Fuzail, आंसर क्या होगा? शजरा, शजरा का मीनिंग क्या है? फुज़ैल, अफीफा, Tree. हाँ, शजरा का आंसर क्या है? मीनिंग क्या है? Family tree. Family tree. फैमिली ट्री हो गया उसरतुल शजरी, या शजरतुल उसरी होगा फैमिली ट्री. शजरा का मीनिंग है ट्री, ठीक है. तो झाड़ को बोलते हैं शजरा, उसरा है फैमिली, ठीक है. तो शजरतुल उसरती होगा ट्री ऑफ द फैमिली या फैमिली ट्री, ठीक है. वेरी नाइस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरफतुन. गुरफतुन आंसर कौन सा है इन 20 पिक्चर्स में? गुरफतुन. गुरफतुन का मीनिंग सोचो और आंसर मार्क करो. तो रहमत, गुड. और कौन ट्राई करेगा कि आंसर क्या है? अगेन गाइस, वोकैबुलरी. गुरफतुन क्या होगा आंसर? Adnan, what is Ghurfatun? We just now saw Ghurfatul Julus. Ghurfatul Julusi. What would that be? Very nice. Fuzail, आप भी mark कर रहे हो. Adnan, can you hear me? Ghurfatun means room girl. Okay, Zahan, you have the answer. Adnan, are you able to hear me? Is your mic working today? Yeah. Yes, so what is Ghurfatun? Room. Room, very nice. Next question. Easy question, very, very easy. Next question is Suratun. Surah. What would that be on the screen? Answer it on the screen. Surah, very nice. Everyone seems to have the answer. Okay, next. Easy question again. Next question is Yusalli. Yusalli, where would that be on the screen? Yusalli. Yusalli, answer कहाँ पे होगा on the screen? We have one answer. We have Zahan marking another answer. Fatia marking an answer. Okay, so Yusalli means playing salah. Okay, so the answer is over here. Very nice. So let's go back to more practice. Okay, so this exercise is tabadal su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. So tabadal का मतलब है एक्सचेंज, तबादल का मतलब है बदलो या आपस में आप डिस्कस करो या एक्सचेंज करो, ठीक है. तो क्या डिस्कस करना है? व्हाट डू वी टॉक एंड व्हाट डू वी डिस्कस? वी डिस्कस as-su'al व जवाब. सो वी डिस्कस क्वेश्चंस और आंसर्स. सो समवन इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, कोई सवाल करने वाला है और कोई जवाब देने वाला है. तो दिस इज सुआला व जवाबा मआ ज़मीलिका, बिटवीन कलीग्स. तो बिटवीन फ्रेंड्स या बिटवीन नेबर्स. कमा फिल मिसाल, तो हम क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं लोगों के बीच में. जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मिसाल है, तो मिसाल है उसके अनुसार हमें क्वेश्चंस और आंसर्स और फ्रेम करना है, ठीक है. तो फर्स्ट वन, पहला मिसाल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज आइनल मेअतोफ. आइनल मेअतोफ, मेअतोफ कहाँ है? वर्ड है मेअतोफ.
तो तालिब 1 बोलते हैं आइनल मेअतुफ, और तालिब 2 बोलते हैं हादा हुवल मेअतुफ, ये है मेअतुफ, ठीक है। और दूसरा मिसाल है आइनल गुरफतु, रूम कहाँ है, और आंसर है हादिही हियल गुरफतु। नोटिस द डिफरेंस, फर्स्ट है हादा हुआ और सेकंड है हादिही हिया। कौन डिफरेंस बता पाएगा हादा हुआ और हादिही हिया? It is सादिया, व्हाट्स द डिफरेंस? हादा हुवल मेअतुफ, हादिही हियल गुरफा। Meotaf is a court Yes, and Ghurfa is a room. yes. So what's the difference between hada huwa and hadihi hiya? Why do we use hada huwa? Then Haza Hua is my court. yeah, no. it is because it is This is a court. Yes, this is a court. This is a room. Hadihi hiya, gurfa is here is a room. Hada That is huwa an al-me'tuf. item. That is a I place. think it's the difference between male and female. male and female. That's the difference. Very good. So we would say hada huwa al-me'tuf, hada huwa al-masjid, hada huwa al-musalla, hada huwa al-me'tuf, hada huwa al-bayt. Hada huwa al-bayt would be this is the house. So it's the same thing. The second one is hadihi hiya al-ghurfa. Notice you need to pay a lot of attention to the ta marbuta at the end. So here we have the ta marbuta. Why? Because ghurfa is feminine. So ghurfa is treated as a girl because of the ta marbuta. So that's why if you say hada huwal ghurfatu, it would be wrong. The ghurfa is treated as a female. So that's why it would be hadihi hiyal ghurfatu. The difference is that here on the first case it's masculine. There's no ta marbuta. Okay, generally when we have a feminine, it has a ta marbuta. So that's why we say hada huwa. Hada and huwa are both masculine. So here is the me'tuf. ये है me'tuf, ये है कोट, और कोट masculine है, लड़का के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि इसमें ta marbuta नहीं है. On the second example, it is ghurfa, और ghurfa में ta marbuta है, ठीक है. तो ta marbuta है मतलब it is likely to be feminine. तो वो लड़की वाला फॉर्म होना चाहिए, इसलिए हम बोलेंगे हादिही हियल गुरफा, ठीक है. तो ये है एग्जांपल्स. इसके अनुसार हमें बाकी वाले वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, ठीक है. तो वेरी इजी, 4 और वर्ड्स है. तो फर्स्ट प्रैक्टिस विल बी बिटवीन अदनान एंड जहान, ठीक है. तो अदनान, जहान, योर वर्ड इज इब्नुन, ठीक है. तो तालिब 1 जहान, who will say an example like Ainal Me'tuf, Ainal Ghurfa would be the dialogue said by Zahan. और second Talib is Adnan, ठीक है. तो Zahan, Adnan, your word is Ibnun. आपको क्वेश्चन और आंसर करना है. तो Zahan, you start. Can you hear me, Zahan? Yes, I was on mute. Yes, Zahan. So what would Aina your Ibnun. Aina Ibnun, what's the meaning of it? Where is the child? Very good. Where is the son or where is the child? Answer, ya Adnan. What would your answer be? Hada huwa ibnun or hadihi hiya ibnun? Adnan, can you hear me? Okay, we cannot hear Adnan. So, one of you three, Rahmat, Adnan is on mute. Adnan, you seem to be on mute. Can you unmute and try talking? Okay, we seem to have lost Adnan. So, we'll give the chance to Rahmat, Nimra, and Sidra. So, one of you or all three of you, try the dialogue of Talib 2. So, Talib 2 is the response. So, you either say Hada huwa ibnun or Hadihi hiya ibnun. What is the correct answer?
Hadihi. We are female. Hadihi. Male. मेल और फीमेल, लड़का है या लड़की है? Ladki. Ladki. So what was the answer? Hazihi. Hiya. Quickly, what is the answer? Complete the answer. Hazihiya. Ibnu? Ibnatun. Oh, this is Ibnun. The word here is Ibnun. Okay. So what would the answer be for Ibnun? Ibnun. Hada huwa huwal Ibnu. Okay, so when it's al, it will be Ibnu. So hada huwal Ibnu would be the answer. And Ibnu is masculine. Ibnu is, where is the Masculine. son? Okay. Yeah. Ibnatun, which you said initially, is feminine. So Ibnatun is daughter. Okay, and one more thing in this question is al me'tafu. Okay, so the question should be ainal me'tafu. So there's an al which would have only a single ending dhamma, which would have only a single ending pesh. Same way, ainal ghurfatu. Okay, so there's an al form in the question and answer. Okay, now again, Zahan and Rahmat Nimra Sidra. Second one, go ahead. Zahan, what would your question be? Aina musalla. Ainal musalla. There's the al. Ainal musalla. Very good. Answer? Hazi. Hiyal. Musalla. Hadihi hiyal musalla. Is musalla masculine or feminine? Masculine. Okay. So when you say hadihi hiyal musalla, you use the feminine case. What would the answer be? Let me show you the word on top. Yes. Hazi huwal. Sorry. Hazi. This is hada. Has. This is male form. This is female. Female form. Hada or hadihi? Haza. Yes, hada. Next. Haza huwal musalla. Musalla. Very good. Musalla. 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 So if it is musalli, there will be two dots at the end. Okay. So musalli will have two dots. Where there's no two dots, where there's just this. So let me show you a few examples. Where we have, this is ilai. Let me make this in fact bigger. Okay. So where we have this is ilai. Okay, this is ila. The second one, this is al musalla, this is tusalli. Notice where you have e, the ya, you have two dots at the bottom. Where you don't have the two dots, it is an alif. Okay, so musalla is not written with an alif, the regular alif. It's written with an alif which looks like this. It is called an alif maksura. It's written like a ya but without the two dots. Okay, so again, Rahmat, Nimra and Sidra, what would your answer be? Hada huwa, hada huwal. Your answer again, Rahmat, Nimra and Sidra. Haza huwal ibnatun. Second one, Musalla. musalla, very good. So, hada huwal musalla. Okay, now next one. Let me see who we have still left. Okay, we seem to have Sadia. So Sadia, you practice, and I don't seem to see Hania Ilaf. Are you guys on the call? Ilaf. You're here, Ilaf? Yes, sir. Okay, you are in the same room as Rahmat and Nimra and Chitra? Yes. Okay, so Ilaf and Hania, you be Talib 2 and Sadia, you be Talib 1. Okay, so Sadia, masjid is the word, and Sadia, what would your question be? Aina masjidi. Ainal masjidi. Aina masjidi. Very good. Answer? Hania and Ilaf? Haza huwal masjid. Very good. Correct. Hada huwal masjid. Why? Because masjid is masculine. Masculine is hada huwa. Very nice. Next, Sadia.
Hania? Here. أين الحمام؟ Very good. Answer, Hania. Hada huwa al-mataf. Hammam is the word. Hammam. Haza hiya hammam. Haza hiya hammam. Oh, wrong. What's the mistake? It's either hada huwa or hadihi hiya. What would the answer be? Hammam. Hadihi hiya hammam. No. Hammam is female or masculine? Hammam is female. No, Not as masculine. There's no ta marbuta, which is a clue, which is a hint. In this case, no ta marbuta, it is masculine. So what would the answer be? Haza hiya hammam. No. Hada huwa or hadihi hiya. We are matching hada with hiya. Which would make Hazihi hiya hammam. no. Hadihi hiya is feminine. Huwa hammam. Hada huwal hammam. So the answer would be hada huwa al hammam. Okay, hada huwal hammam. You can never match hada with hiya because hada is masculine, hiya is feminine. If you match hada with hiya, your answer is always wrong because hada will go with huwa, hadihi goes with hiya. So when you say hada hiya, the answer is definitely wrong. So you are mixing one male with one female. So the answer is either hada huwa, which you will see here in orange, and at the bottom you'll see hadihi hiya, which is feminine. Okay, now we'll let you continue Ilaf and Hania as Talib 2. Adnan, can you hear me? We seem to be losing you. You're on mute, Adnan. Okay, you're here. So Adnan, you will ask the next few questions, okay? So this picture here is Surah. What would your question be, Adnan? So Surah is the word, your Talib word. So what is the question? Al-suratu. Your Talib 1. So Talib 1 has to ask where is the picture? Aina. Aina. Now what you have to do to the next word is add an al in front of it. You've got to put an al, okay? That's what you do to the word. So what would the question be, Adnan? So Aina. What is the question, Adnan? Surah. Aina al Surah. suratu. Ainal suratu. So the aina, the na will merge with the lam and we'll skip the alif. Okay, so ainal suratu. Now we'll do more questions with you, Adnan. What would the next question be? The word is shajara. Shajara. What is the question? Where is the tree? How do you say where is the tree? What do you say for where? Shajara. How do you say where? Na ala. Again? Aina ala. Aina and Ala. the tree. How do you say the tree? Ala. No. Aina. Ajra. Where is the tree? Aina shajaratu. Aina. So you say Aina al shajaratu. The na will merge with the lam. So instead of Aina al shajaratu, which is very difficult to pronounce, so we will not say Aina al shajaratu. We will say Ainal shajaratu. Would be the question. Next question, Adnan. What would be your question with the word nadara? How do you say where are the glasses? How do you say where are the glasses? Ainal. Go on. Tu. No. Pronounce nadaratu correctly. Nazaratu. Yes. So with Aina, how do you say it? Ainal. Nazaratu.
Ainan nadaratu. Okay, so with few letters like the noon, the lam also will get skipped. Will become Ainan nadaratu. Okay, last one. Ibnatun is the word again, Adnan. What would be the question for where is the Ibnatun? Where is the daughter? What would the question be? Ainan ibnatu. Very good. Ainal Ibnatu. Okay, now Adnan, you'll do the practice dialogue. Okay, so you'll be Talib 1 and Ilaf Hania take turns to be Talib 2. So Adnan, first question, what is Surah? So how do you say where is the Surah? Where is the picture? Ainal suratu. Very good. Answer. Haza or suratu. Hada huwa or hadihi hiya? Hadihi. Final answer. Hadiya. Hadihi hiya hiyal suratu. Or confident? Yeah. Lock कर दिया जाए? Ji. Okay. Hadihi hiyal suratu is correct because it is feminine. It has a ta marbuta at the end. Correct. Next one, Adnan. Ainal shajaratu. Very good. Answer. Haza hiya sajatu. No, wrong. Sajati. Haza means Haza huwal. Yeah, Haza huwal. Shajaratu. Tell. Haza Hada huwa or hadihi hiya. You need to memorize it. Hada huwa Hada huwa or shajar. hadihi hiya. Just write this. Haza huwal. Hada huwa shajaratu. No, it has a ta marbuta at the end. It is feminine. Feminine. Two is me. Yeah. This is also, we have Ibnu, Masjidu, Al-Ibnu, Al-Masjidu, Al-Hammamu. This is Ash-Shajaratu. So the ending is always going to be U. Okay, so in the normal form, the ending is always U. What you need to see is it is some other U. Is it Nu, Mu, Du, or is it Tu? Where it is Shajaratu, where we have the ending Tamarbuta, it becomes feminine. So it's always going to have an U. The question is it Tu or is it some other U? It's two. Yes, so is it male or female? Female. So female is Hada Huwa or Hadihi hiya? Hadihi hiya shajaratu. Very good. Hadihi hiya shajaratu. Next question, Adnan. Ainan nadaratu. Aina nataratu. Very correct, Adnan. You did the joining also correctly. Very nice. Answer. Hadihi hiya nadaratun. Another two. When we add an al, we only have one dhamma. We only have one ending vowel. Okay, so an-nadaratu. Last one, Adnan. Ainal ibnatu. Ainal ibnatu. Very good. Hazihi hiya ibnatu. Hadihi hiyal ibnatu. Al ibnatu. So, coming to the lesson we learned. So, we have qalamun. When we add an al in front, it will become al qalamu. Okay, it will no longer be al qalamun. Question to you guys. So, Ila, Fania, Rahmat, Sidra, Nimra. Al plus talibun. Okay, so talibun means student. Al plus talibun. When we say the student, this particular student, how do we say the student? Al talibu. At-talibu. Very good. Now, al plus tabibun. Tabibun means doctor. How do you say al plus tabibun? The doctor. This doctor. How do you say? Al taibuhibu. At-tabibu. Okay, so at-tabibu, it becomes one single vowel. Mudarrisun means teacher. So someone who teaches a dars is mudarrisun. So al plus mudarrisun, what would the word be? Mudarris. Al mudarrisu. Okay, so there's only one vowel at the end. Awesome. Now we will do a few exercises on the present tense verb, and I'll show you what's the difference. Okay, so this is a grammar lesson which we have seen in dialogue 3, but you may not have picked up. Okay, so this is the present tense verb. Let me put everyone on mute. Okay, awesome. So this is the present tense verb. Okay, what is
अ वर्ब, तो ये है प्रेजेंट टेंस वर्ब। तो वर्ब क्या है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोई भी एक्शन का, कोई भी काम का, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस वर्ब वुड बी प्ले, कुक, रन, स्विम, लाफ, रीड, स्लीप, वर्क, ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट टेंस एक्शंस। तो ये वो वर्ड्स है कि कोई अभी ये कर रहा है, ठीक है। तो कोई खेल रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई भाग रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई डॉग, कोई कुत्ता बाग कर रहा है, ठीक है। तो अल कल्ब है डॉग, डॉग बाग कर रहा है, जो अभी हो रहा है, ठीक है। अभी हमारे सामने कुछ हो रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्ब। और प्रेजेंट टेंस वर्ब मतलब अभी हो रहा है। तो ऐसे नहीं है कि कुछ हो चुका था, ऐसे नहीं है कि मैं कल सो चुका हूं, नहीं, ये नहीं है कि मैं कभी करूंगा, मैं कल संडे वाला क्लास अटेंड करूंगा, वो भी नहीं है। तो है कि अभी मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं लिख रहा हूँ, दैट इज अ प्रेजेंट टेंस वर्ब। Okay, now how do we say a present tense verb in Arabic? So pray salah, a person praying salah, what is the word that we use? He prays, ठीक है। तो कोई सलाह पढ़ रहे हैं, कोई सलाह पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा? He prays. Whoever wants to answer, unmute and guess what's the answer for he prays. He prays. Yusalli. Yusalli, very nice. Correct answer. Yusalli is he prays, ठीक है। तो युसल्ली मतलब वो सलाह पढ़ रहे हैं। यतवद्दउ मतलब वो वुदू कर रहे हैं, ठीक है। यक़रउ, यक़रउल कुरान मतलब वो कुरान पढ़ रहे हैं, और ये है मैस्कुलिन, वो है लड़का। तो युसल्ली, यतवद्दउ, यक़रउ, यक्तुबु सारे लड़के को रेफर करते हैं। जब हम लड़की की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि वो लड़की सलाह पढ़ रही है, तो आंसर हो जाएगा तुसल्ली, ठीक है। अब कौन स्मार्ट है जो गेस करके बता पाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वो लड़का नमाज पढ़ रहा है, वो लड़की नमाज पढ़ रही है, दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? ये आप आंसर देखोगे रेड और ब्लू, आपको पता चल जाएगा क्या है आंसर। In the Ya and tu. Very good, Yusalli correct. and tusalli. करेक्ट। तो Yusalli. जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग चेंज होगा, ठीक है। दैट इज द क्लू। तो युसल्ली मतलब वो लड़का, तुसल्ली मतलब वो लड़की। अभी विल सी और एग्जांपल्स, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन इज, ये आदमी क्या कर रहा है? Read. जहान, पढ़ रहा है। इज ही रीडिंग और इज ही स्लीपिंग? I'm like this right now. He's reading. He's reading. Zahan, what do you think? Zahan is sleeping. It looks like he's closing his eyes. Zahan, he's reading or he's sleeping? He's reading. He's supposed to be reading, okay? He's So, supposed to be reading. huwa yaqra'u is he reads, okay? So he's reading. Assuming that, suppose that he's reading would be huwa yaqra'u. Now, she reads, what would the answer be? She reads. Huwa yaqra'u is he reads. Okay, so it's a boy. When it comes to a girl, what would the answer be? Remember. Tusalli, tusalli. The ending is the ya. The difference is the starting ya or the ta. Now, when it comes to huwa yaqra'u, what would we say for she reads? वो लड़की पढ़ती है, लड़का पढ़ता है यक़रउ, लड़की पढ़ती है, आंसर क्या है? तक़रउ. तक़रउ, very good, that's the answer. So she reads, वो लड़की पढ़ रही है, is तक़रउ. You just replace the ya with a ta, and that's the difference between he and she. एक लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, the ending is just the starting ya or the ta. Okay, very very easy, very simple. Next question. ये वर्ड हम जानते हैं। तो कोई लड़का वधू बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं? Yatawadu. यतवद्दउ, वेरी गुड। कोई लड़की अभी वजू बना रही है, उसको क्या बोलते हैं? तत्तवद्दु. ततवद्दउ, वेरी नाइस। एंड यतवद्दउ इज अ बॉय डूइंग वुदू।
Now, kataba means to write. We have a girl who's writing. It would be taktubu. Okay. Now, a boy who writes, what would the answer be? Yaktabu. Yaktubu. Everything else is the same. Okay. So, yaktubu is the answer. Taktubu, yaktubu. The only difference, as I mentioned, is the girl, she starts with a ta. Yaktubu would be she writes. Sorry, taktubu would be she writes. Yaktubu is he writes. So a girl is taktubu. तो एक लड़की लिख रही है, उसको बोलेंगे taktubu. एक लड़का लिख रहा है, उसको बोलेंगे yaktubu. Very very easy है, ठीक है? तो स्टार्टिंग ता या आपको यही देख के डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? What is this boy doing, Adnan? Holding his head. Holding his He's supposed to be studying, okay? He's studied a lot, and he's telling that I have studied, okay? So I have studied a lot, okay? I have read a lot. That would be yadrusu. So I study a lot. Now, when it- say for a girl, okay? So a girl is Tadrusu. 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 Any other answers? No. Tadrusu. Tadrusu. Tudrusu. Tadrusu. Yadrusu Tadrusu. become tadrusu. Same pattern. Everything else stays the same. Okay, very nice. So this is the grammar for the next exercise. Okay. So next exercise is tabadal su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. So exchange between friends, exchange between zamil, exchange between colleagues. We again will have talib 1 और talib 2. तो फिर से talib 1 और talib 2 होंगे, जो होंगे जमील, जो होंगे दोस्त, जो होंगे फ्रेंड्स, कमा फिल मिसाल. तो मिसाल है, मिसाल के अनुसार जवाब देना. तो मिसाल क्या है? First we have words. We have Saidun al-ghurfatu yaqra'ul Qur'ana. ये है वर्ड्स, 3 वर्ड्स. Saidun al-ghurfatu और यक़रउल कुरान, ठीक है? तो डायलॉग कैसे बनाना है? आइना साइदुन, वेयर इज साइद. आइना मतलब कहाँ, आइना मतलब वेयर, वेयर इज साइद. साइदुन फिल गुरफती यक़रउल कुरान, ठीक है? तो साइद इज इन द गुरफा, साइद इज इन द रूम, यक़रउल कुरान, रीडिंग द कुरान, ठीक है? Now next example is Sa'idatun al-ghurfatu taqra'ul Qur'ana. तो सेम एग्जाम्पल, जब सईद है तो वो एक लड़का है, तो सईद इज मैस्कुलिन, सईद इज अ बॉय और सईद इज अ मैन. व्हेन वी से फॉर सईदा, सईदा इज फेमिनिन, सईदा इज अ गर्ल, सईदा एक लड़की है. तो जब हम सईदा के लिए बोलेंगे, तौलिब 1 पूछता है आइना सईदा, तौलिब 2 होता है सईदतुन फिल गुरफती. सेम, कोई डिफरेंस नहीं है. सईदुन फिल गुरफती, सईदतुन फिल गुरफती. यहाँ पे जहाँ सईद है, फर्स्ट एग्जांपल जो हमने अभी किया है, इट विल बी यक़रउल कुरान. नोटिस द स्टार्टिंग इज या, शुरू या से होता है, तो वो लड़का है. सेकेंड केस तक़रउल कुरान, तक़रउ स्टार्टिंग इज ता, सो स्टार्टिंग ता मतलब लड़की है. दैट्स द डिफरेंस. ओके, और ये है होमवर्क. सो पैज में करना है. तो रहमत, निमरा, सिद्रा, हानिया, इलाफ, form pairs between you. Form 3 sets. One of you will do the dialogue twice. Okay. So form 3 groups between you so that everyone has a chance. सादिया, अदनान, आप एक ग्रुप हो. फुजेल और अफीफा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप एक ग्रुप हो, ठीक है? और आपको प्रैक्टिस करना है. और वर्ड है यहाँ पे पेज नंबर 59 इन दी बुक. तो आपको यही बुक यूज करना है जो हम क्लास में यूज करते हैं. अल अरबियतु बैना यदैक, बुक 1 पार्ट ए. बुक में 282 पेजेस है. थोड़े लोगों को बुक डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो फुजेल, अफीफा, आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, लेट मी ट्राई टू हेल्प यू. और किसी को बुक डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, लेट मी नो. यू नीड द बुक. ओके, तो बुक के बिना आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप होमवर्क नहीं कर पाओगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे.
तो एवरीवन नीड्स टू हैव द बुक. अगर किसी को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेट मी नो आफ्टर द. दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने में. लेट मी हेल्प यू रहमत. तो रहमत को दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने में. Let me help you. The size of the book is big, which is I think why you face a difficulty. So let me help you with the download. So I'll help you downloading the book. The homework जो है वो है पेज नंबर 59 में and और वर्ड्स है. ठीक है. तो we have सालिहुन जो एक लड़का है. The words are al masjidi yusalli. We have सालिहतुन जो एक लड़की है. सालिहतुन इज फेमिनिन, इट्स अ गर्ल. अल मुसल्ला तुसल्ली, इसके साथ ऐसे ही सेंटेंसेस बनाना है. ठीक है, जैसे ऊपर है. और लास्ट में वी हैव शरीफुन जो एक लड़का है. वो जर अल हम्मामी यतवद्दउ एंड शरीफतुन, तो शरीफा एक लड़की है. वो जर अल बैती ततवद्दउ. ठीक है, यहाँ पे सेकंड वर्ड भी चेंज हो रहा है. तो शरीफुन हम्माम में या बाथरूम में बनाते हैं वधू. शरीफतुन में द वर्ड इज अल बैती, इन द हाउस. एंड द वर्ड फॉर वधू इज ततवद्दउ. और आपको क्या करना है, आपको डायलॉग्स बनाना है विद 1 2 3 4 5 6 केसेस. ठीक है. फुज़ैल, अफीफा, क्लियर हो अब समझा सकते हो सभी को कि होमवर्क क्या है और कैसे करना है. फुज़ैल, अफीफा, शायद आप म्यूट पे हो. आपको माइक वाला बटन जो एक माइक की तरह एक बटन है, उसको दबा के बात करना है. फुज़ैल, अफीफा, अनम्यूट करके आप बता सकते हो होमवर्क क्या है. यस, आप अनम्यूटेड हो. यस फुज़ैल, अफीफा, होमवर्क क्या है. अनीना सईदुन फिल गुरफती यक़रउल कुरान. वेरी गुड. तो यही करना है बाकी वाले एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक है. और यह है पेज नंबर 59. और आपको बुक डाउनलोड करना है जिसमें मैं आपको हेल्प करूंगा. एंड दैट इज द लेसन फॉर टुडे. एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस ऑन टुडेज लेसन? Awesome. If anyone has a question, stay back in the call and we'll take questions or we'll do any practice. Okay. For everyone else who doesn't have a question, we will close inshallah. Subhanallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Thank you all for attending the class and see you tomorrow inshallah. Kal milenge at 12:30 p.m. inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मा सलामा. As-salama. Stay safe and we'll see you tomorrow inshallah. Girls, 3 o'clock sharp come to my room. We'll do first and send, okay? 3 o'clock sharp. Allah jazakallah khair. Wa yakum. We'll do As-salama. first.